Hello everyone. Today we are going to learn an amazing trick of electronic configuration. This trick is going to help you out in board exam, JEE exam, NEET exam and MHTCET exam. So what's the trick? The trick is of electronic configuration, learning electronic configuration without remembering atomic number. Yes, the whole world, the whole India is writing electronic configuration with the help of atomic number. But today we are going to learn electronic configuration without remembering the atomic number, and it is all there in your hands. So let's begin. The electronic configuration, what we're going to learn today, that is S and P block. You all know in the periodic table, the S block is group 1 and 2. P block is group 13 to 18. We have learned the atomic number and the mnemonic for each and every group. But let us revise it again. The first one, before I tell you the mnemonic, let us see some general electronic configuration, the real trick of it. When we write group 1, the group 1 it is only one valence electron. So we just write NS1, where N stands for period number. Group 2 is 2, so it is 2 valence electrons. So NS2, where N stands for period number or shell number. Okay. Group 13, that is P block. My first is group 13. Group 13 may you catch 3. 3 may say 2 electrons will go to NS2. 1 electron will go to NP1. 14 may 4 electrons are there. So 4 electrons may say 2 electrons will go to NS2. Okay. And other 2 electrons will go to NP2. 15 mate is 5. There are 5 valence electrons. Out of 5, 2 will go to NS2 and 3 will go to NP3. 16 mate is 6 valence electrons. So 6 may say the 2 will go to NS2 and 4 will go to NP, that is NP4. 17 kite is 7. So 7 ko we write NS2 NP5. 18 ko 8. So we write NS2 NP6. Let us see how this general configuration is applied to each and every element. Let's begin with group 1. So group 1 is NS1, and NS1 we know group 1 may all elements are Li, Na, K, RBCs for R. This is our shortcut. Li stands for lithium, Na is sodium, K. Li, Na, K mein K is potassium. RBC is red blood cells, RB is rubidium, CS is cesium, FR is francium. And for atomic number, you remember 2 times 8, 2 times 18, and 1 times 32 from the top. 3 plus 8 is 11, 11 plus 8 is 19, 19 plus 18, 37, 37 plus 18 is 55, 55 plus 32 is 87. But today we'll be focusing on the configuration. How do we get configuration? If I tell me the configuration of cesium, then you use this shortcut in your hands. How it is? Li, Na, K, RB, cis. So what it is 6th finger in my hand. But how do I got 6th finger? Did I start from the first finger? No, I started from the second finger. So this shortcut we have to remember. You have to start from second finger. Why? Because this lithium is in the second period in the periodic table. Since it is in the second period, so you will start from the second finger. So it will be what? Li, Na, K, RB, cis. What you got? 6th. So it is in 6th period. So instead of this N, you put 6s1. You put 6s1. And which inert gas you have to write before 6s1? So I would say one number less. So you know inert gas ka configuration ka shortcut. He never argues with Kirana wala, Xerox wala, Ration wala. Okay. So if I tell you if it is 6s1, then I have to write 5th inert gas. Then it is what? He always comes from the first period. Group 18 we have to catch from one finger, first finger. So it is he never argues Kirana wala, Xerox wala. Xerox wala is what? Xenon. So xenon is 6s1. So xenon 6s1. So did you see? I was not looking at the atomic number 55. I told you the configuration without atomic number. So what it is? Simple. Lithium, it is in second period. So it is helium 2s1. Sodium is in third period. Neon 3s1. Argon is in fourth period. So it is argon 4s1. Okay. Rubidium is in fifth period. So it is krypton 5s1. Cesium is xenon 6s1. And rubidium is radon 7s1. Again, I am telling you, nobody is going to ask you in a line. So you should know how to count on a finger.
Let's see how much you have learned it in the group 2. The group 2 is beta mange car scooter baap rasi, where beta is beryllium Be, where mange ka Mg is magnesium, car ka Ca is calcium, scooter ka Sr is strontium, and baap ka Ba is barium, and razi का Ra is radium. Atomic number का भी shortcut मैंने बताया था, 2 times 8, 2 times 18, 1 times 32. You can do it at home. Focus on configuration. NS2. If I tell you the configuration of strontium, use your hands. Beta, mange. Again, I am starting from second finger. I want strontium, Sr. Beta, mange, tar, scooter. Scooter is what? 5. So instead of N, I'll put 5. It is 5s2. If it is 5s2, then I'll put inert gas as fourth inert gas. So what is that fourth inert gas? Helium, neon, argon, krypton. He never argues with Kiranawala. Kiranawala, that is krypton. That is krypton 5s2. Did you get? I was not looking at atomic number. So again, very simple. Beryllium second period, helium 2s2, magnesium third period, neon 3s2, calcium fourth period, argon 4s2, strontium 5th period, krypton 5s2, barium 6th period, xenon 6s2, and radium 7th period, radon 7s2. I hope you got it, but you need to practice on your fingers. Going to the next one. Before I tell you for the P block, you need to revise one thing from the last video. You remember this was at the energy level given, where N is the shell number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and sub shell number is what? SPDF 0, 1, 2, 3. Okay, that this is a subshell number. We calculated the energy level, that is N plus L. 1s के लिए 1 plus 0 1, 2s के लिए 2 plus 0 2, 2p के लिए 2 plus 1 is 3. So I'm not going in detail. But if I tell you for 3p, 3 is the shell number, p ka subshell number is 1, so 3 plus 1 is 4. Then we arrange them in a increasing order of energy level. So increasing order में the lowest energy was what? With the 1s, then it was 2s, then it was 2p. If you can check this, the increasing order is the lowest energy is of 1s, then it is 2s. But then I told you if the number is same, electron prefers to go to lower energy. So it will be 2p, then 3s, then 3p, then it is 4s, and then it is 3d, because 3p may 3 will come first, then the 4s, because both are 4. Okay, but what we have to remember for the group configuration? What we have to remember for the group configuration? You have to remember for the group configuration, whenever you mention 4s, you have to write 3d also, because after 4s, 3d is filled. Whenever you mention 5s, you have to mention 4d also, because after 5s, 4d is filled, because fifth shell is the last shell. How you have to remember this? I tell you in one of the examples, then you will get it why I am telling this for you all to remember. Okay, like for example, for group 13, group 13 का shortcut क्या था? बाल गणेश इन तलाव, where बाल का B is boron, Al is aluminium, Ganesh का Ga is gallium, in ka ion is indium, and talao ka Tl is thallium. For the atomic number, you remember 1 times 8, 2 times 18, and 1 times 32. For P block group 13 to 17 is only 1 times 8, 2 times 18, and 1 times 32. For configuration, group 13 में 3 you have to remember, NS2, NP1, 3 में से 2 electrons will go to NS, 1 will go to NP, NS2, NP1. But when you go to configuration, suppose if I tell you for indium, so again you have to start from second finger, don't forget, Bal, B, Al, Bal, Ganesh, N. N is what? 5. So instead of NS2 and P1, what you will write? 5s2, 5p1. And which inert gas? One number less. Agar वो 5s है last shell, तो one number less, fourth inert gas. So fourth inert gas क्या है? He never argues with Kirana wala. So Kirana wala is krypton 5s2, 5p1. But what did I say? कि जब भी आप लिखोगे 5s तो उसके पहले 4d लिखना ही है. अगर आप 4s लिखोगे तो उसके पहले 3d लिखना ही है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस रूल दैट 5s के बाद आपका 4d आता है. ओके, तो व्हेन यू आर फिलिंग 5s तो आपको 4d भी करना है, बिकॉज 5s के बाद में 4d फिल होगा, उसके बाद में 5p फिल होगा. तो यू आर राइटिंग 5s to 5p1, तो यू हैव टू राइट द मिडिल वन 4d ऑल्सो. ओके, इसलिए हमें लिखना है. पर वे टू रिमेंबर, मैं आपको सिंपल बताता हूँ याद कैसे रहेगा. 4s 4p आएगा तो उसके पहले 3d लिख देना है. 5s 5p आएगा तो उसके पहले 4d लिखना है, वन नंबर लेस. और लास्ट एलिमेंट पूरे p ब्लॉक में, लास्ट एलिमेंट में 6s 6p के पहले 5d लिखना है और उसके पहले 4f लिखना है. दिस 4f
is only in the last element of each and every group. ग्रुप 13 का भी लास्ट एलिमेंट में 4f, 14 में भी 4f, 15 में भी 4f, 16 में भी 4f, लास्ट एलिमेंट में भूलना नहीं है. तो 6s 6p के पहले 5d, 5d के पहले 4f. So if I tell you thallium 81, so thallium 81, so what I'll do, b al Ganesh in Talav. That Talav is what? Thallium. So what I'll write 6s to 6p1. तो 6s to 6p1 है, पर उसके पहले 5 क्या आएगा? 5d10. ओके, और क्या आना चाहिए? एंड वाला है तो 4f14 लास्ट एलिमेंट है, और इनर्ट गैस क्या आएगा? 6 है तो 5th वाला इनर्ट गैस आएगा, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. तो जेनॉन आएगा. तो जेनॉन 4f14, 5d10, 6s to 6p1. आपको ये और क्लियर होगा अगर आप नेक्स्ट ग्रुप ट्राई करोगे मेरे साथ. तो नेक्स्ट ग्रुप में क्या है? इट इज केमिस्ट्री सर गेट्स स्नोफॉल इन पब्लिक. केमिस्ट्री का सी इज कार्बन, सर इज SI सिलिकॉन, गेट्स का GE इज जर्मेनियम, SN दैट इज स्नोफॉल, SN इज व्हाट? टिन, एंड पब्लिक का PB इज लेड. एटॉमिक नंबर का शॉर्टकट वही है, और कॉन्फ़िगरेशन में अगेन इफ आई टेल यू कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैंने आपको लेड पूछा तो आप क्या करोगे? अगेन स्टार्ट फ्रॉम सेकंड फिंगर. केमिस्ट्री सर गेट्स snowfall in public. At public is what? 6. So what you will write? Group 14 का क्या है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP2, 4 है NS2NP2, so 4. तो NS2NP2 में N की जगह पे क्या आएगा? 6. So we write 6s to 6p2. पर 6s to 6p2 के पहले क्या लिखना है? 5d10. उसके पहले क्या लिखना है? 4f14, बिकॉज ये लास्ट एलिमेंट है. तो 6s to 6p2, 5d10, 4f14. पर इनर्ट गैस कौन सा? लास्ट शेल है, उसका सेकंड लास्ट वाला इनर्ट गैस मींस 5th वाला इनर्ट गैस. तो 5th इनर्ट गैस क्या है? ही नेवर आर्ग्यूज विद किराना वाला, जेरोक्स वाला. तो जेरोक्स वाला दैट इज जेनॉन. तो जेनॉन 6s to 6p2. अब before that it is 5d10, before that it is 4f14. I hope you are getting it. अगर आपको एक और ट्राई करना है तो let us try germanium. Germanium is what? It is chemistry sir gets. ये gets क्या है? Gets 4s to 4p2, 4s to 4p2. तो उसके पहले क्या आएगा? 3d10. तो ये 3d10 में हमें क्या लिखना है? उसके वहां पे 3d10 तो आएगा ही, पर 4s to 4p2 के पहले इनर्ट गैस कौन सा आएगा? थर्ड वाला. तो हीलियम, नियॉन, आर्गन. So argon 3d10, 4s2, 4p2. You practice this for the group 15. Group 15 का 5 को what you will write? NS2NP3. If it is NS2NP3, तो again it is what? क्या है इसका शॉर्टकट? नीले पीले आसमान में सब बिंदास घूमो. I have not given you the symbol here, but antimony का symbol is SB. फिर नीले का it is N nitrogen, पीले का P is phosphorus, arsenic का AS is आसमान, and sub का SB is antimony, and bismuth का BI is bismuth. That is nothing but bindas का BI is what? Bismuth. Atomic number का shortcut वही है, but again configuration. If I tell you antimony SB, so how will you tell me antimony SB? नीले, again starting from second finger. नीले पीले आसमान में सब. सब कहाँ आया? 5. So what you will write? 5s2 5p3, NS2NP3 के जगह पे 5s2 5p3. तो और उसके पहले क्या आएगा? 4d10 एंड 4th इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन. सो क्रिप्टॉन 4d10, 5s2 5p3. होप यू आर गेटिंग 5s2 5p3. एंड व्हाट इज दिस ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर? आपको पता ही है मैं 15th ग्रुप की बात कर रहा हूँ. सो व्हाट इज पीरियड नंबर? द लास्ट शेल. You remember shell number is a period number. What was the last shell in my hand? 5. So it's a period number is 5. Simple. So from configuration we can get the period number as well. Okay. Let's try for group 16. Group 16 का shortcut है old style से tail polish, और old style से है तेरी poem, और old style से TPO, where old O is oxygen, style S is sulfur, say selenium. टीपो में टी इज टेलूरियम, या तेल में टी इज टेलूरियम, या तेरी पोयम में तेरी का टी इज टेलूरियम, एंड पीओ इज पोलोनियम. ओके, पोयम का पीओ इज आल्सो पोलोनियम, और पॉलिश का पीओ इज आल्सो पोलोनियम. बट वी आर लर्निंग कॉन्फ़िगरेशन. ग्रुप 16 का 6 NS2NP4. इफ आई आस्क यू पोलोनियम, एवरीबॉडी लास्ट एलिमेंट मींस क्या याद रखना है? लास्ट एलिमेंट 4f14. सो लेट अस डू हियर इन योर हैंड्स. इट इज ओल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड फिंगर, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश. कहाँ आया? 6 में आया. इट मीन्स व्हाट आई राइट? NS2NP4 के जगह पे
6s to 6p4, 6s to 6p4, और उसके पहले क्या आएगा 5d10, उसके पहले क्या आएगा 4f14, वाई बिकॉज ये लास्ट एलिमेंट है जिसमें 4f14 आएगा, मैंने बोला था। पर इनर्ट गैस कौन सा, सेकेंड लास्ट वाला इनर्ट गैस। अगर सिक्स्थ शेल इज द लास्ट शेल तो हमें इनर्ट गैस कौन सा लेना है, फिफ्थ वाला इनर्ट गैस लेना है। ही नेवर आर्ग्यूज विद किराना वाला, जेरोक्स वाला। तो जेरोक्स वाला इज जेनॉन, 4f14, 5d10, 6s2, 6p4. I hope you're getting it. Xenon was the 5. Okay, we wrote 6s2, 6p, 4, 5d10, 4f14. That is xenon, 4f14, 5d10, 6s2, 6p4. That is for the polonium. Similarly, you practice for other configurations also. इट इज द सेम थिंग व्हाट वी लर्नड इन अदर ग्रुप्स। वहां पे भी 3d10 था, यहाँ पे भी 3d10 है, यहाँ पे भी 4d10 है। बस व्हाट इज चेंजिंग, द लास्ट शेल इज चेंजिंग। रिमेंबर NS2NP4, ये भूलना नहीं है। ग्रुप 17 का 7 NS2NP5 configuration is general configuration is NS2NP5, there is 7 valence electrons. What is the atomic number, what is the symbol? First class brownie I8, first is fluorine, class का Cl is chlorine, brownie का Br is bromine, and I is iodine, and 8 का it is astatine. Again, if I ask you कि मुझे bromine का configuration बताओ, तो again first element is in the second period, so it is first class brownie. So brownie is in fourth. So what we write, NS2NP5 के जगह पे 4s2 4p5, and then उसके पहले 3d10, and your inert gas would be third inert gas, helium neon argon. So argon 3d10, 4s2 4p5. Hope you are getting it. 4s2 4p5, the last shell कौन सा है, fourth shell is the last shell, so period number is fourth. And lastly, group 18, it is helium neon argon, krypton xenon radon. He never argues with किराना वाला, जेरोक्स वाला एंड राशन वाला। अगेन जेनॉन का अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जेनॉन क्या है, पर ये ग्रुप में याद रखना सेकंड फिंगर से नहीं करना है, फर्स्ट फिंगर से करना है। व्हाई, बिकॉज हीलियम इज इन द फर्स्ट पीरियड। सो व्हाट यू विल डू फॉर जेरोक्स वाला, ही नेवर आर्ग्यूज विद किराना वाला, जेरोक्स वाला। तो जेरोक्स वाला क्या है, फिफ्थ है। सो व्हाट यू राइट, NS2NP6 के जगह पे ग्रुप 18 का 8 इज NS2NP6, तो हम लोग N के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। वी राइट 5s2 5p6, एंड क्या आएगा 4d10, और 4d10 और कौन सा आएगा, फोर्थ इनर्ट गैस। ही नेवर आर्ग्यूज विद किराना वाला, सो किराना वाला क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6 is the configuration of xenon. I hope you all are getting the trick. पर ये ट्रिक सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, बट ये ट्रिक को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे हैंड्स में, तब तक ये ट्रिक सिर्फ मेरे प्रेजेंटेशन में ही है, मेरे लेक्चर में ही है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा। मैं तो रोज प्रैक्टिस करता था, और रोज मेरे फ्रेंड्स को या मेरी बहन को या मेरे भाई को बोलता था कि यू टेल मी, यू आस्क मी एनीथिंग, आई शुड बी एबल टू गिव यू द आंसर। द मोर यू प्रैक्टिस, थोड़ा बच्चे जैसा प्रैक्टिस करो हैंड्स में, बट देन यू बिकम मास्टर ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट वी लर्न द कॉन्फ़िगरेशन, पूरा ग्रुप 1 ग्रुप 2 पढ़ा, 13 to 18 पढ़ा। आई टेल यू, यू लर्न अराउंड 50 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एटॉमिक नंबर। सो आई होप यू विल प्रैक्टिस दिस, एंड जब तक आपको ये टिप ऑफ द टंग पे नहीं आता, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहो एंड मास्टर दिस ट्रिक, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपको एक या दो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पर यू सी टू इट, यू शुड नॉट गो रॉन्ग इन दिस बेसिक पार्ट। ओके, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगे। एंड स्टे ट्यून इन दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, share this video, because this is an amazing trick. And I would also say keep practicing hard, because our aim is to get all India rank in the exam. That's why we are sharing this trick. Thank you. Thanks a lot.